So I welcome all of you today to the validatory session of the World Space Week celebration. Before we begin, we have a small compilation video of the 7 days program that was held across the state. So just have a look at the movie and then we'll begin the program. Hello. Check. It's okay.
I hope you people have enjoyed this beautiful video. It was giving a glimpses of our week-long celebration of World Space Week. Our experts also are here with us. So मैं ऋचा श्रीवास्तव आप सभी का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुज कोस्ट एंड गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ. Today, we are pleased to have with us our Associate Director, R&D, Space Applications Center, Sri Apurv N. Bhattacharya, sir. Advisor and Member Secretary, Gujarat Council on Science and Technology, GUJCOST, Dr. Narottam Sahu, sir. Senior Scientist at SAC, Sri Ravi Kumar Verma, sir. General Manager, Science Popularization, Gujarat Science City, Dr. Britesh Parikh, sir. Principal Scientific Officer, GUJCOST, Dr. Poonam Bhargav, ma'am. Our experts who visited and interacted with students. All the regional science centers who joined with us today through virtual mode and our lovely audience. World Space Week is observed every year from 4th of October to 10th of October to celebrate the contribution of science and technology. साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहा है. पिछली बार हमने गुजकोस्ट के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में सेलिब्रेट किया था और इस साल भी हमने गुजकोस्ट और गुजरात साइंस सिटी के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में ये पूरा वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन किया है. तो इस सेलिब्रेशन का इनॉग्रेशन हुआ था 4 अक्टूबर को यहीं पर, यही वेन्यू था और उस समय हमारे साथ उपस्थित थे यहाँ पे डायरेक्टर सैक श्री नीलेश देसाई सर, डॉक्टर नरोत्तम साहू सर, एडवाइजर एंड मेंबर सेक्रेटरी गुजकोस्ट, श्री जे.बी. वाडर सर, एडिशनल कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुजरात साइंस सिटी. उन्हीं के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था और आज हम लास्ट डे मतलब वैलेडिक्टरी फंक्शन तक पहुँच गए हैं और हमें बहुत खुशी है आप सब आज यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वैलेडिक्टरी फंक्शन में. मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ. We organize this World Space Week and we plan so many activities for you, starting with the expert talk where our scientists and engineers from Space Applications Center interacted with students at regional science centers and Navodaya School, Gandhinagar, and even in Gujarat Science Center. तो एक क्वेश्चन है मेरे मन में आप सभी बच्चों से. मुझे पहले ये बताइए कितने लोग हैं जो गूगल में क्वेश्चंस के आंसर सर्च करते हैं? बहुत सारे लोग. तो जब भी हम गूगल में कोई क्वेश्चन का आंसर सर्च करते हैं तो हमें 10 से 15 से समटाइम्स इवन मोर देन 15 आंसर्स मिलते हैं. देन ये कैसे हम पता करें कि कौन सा आंसर ऑथेंटिक है और कौन सा ऑथेंटिक नहीं है? नहीं पता कर सकते ना. इसी वजह से हम अपने यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हमारे साइंटिस्ट और जो हमारे इंजीनियर्स हैं जिनका खुद का योगदान रहा है हमारे स्पेस मिशंस में, उन ताकि आप उनसे डायरेक्टली अपनी क्वेरीज और डाउट्स को के सल्यूशंस पा सके और ऑथेंटिक सल्यूशंस और रिप्लाईज पा सके. इसके बाद ये तो थी टॉक और लेक्चर की बात. इसके बाद हमने कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज कराए थे इस वर्ल्ड स्पेस वीक के अंतर्गत, जिसमें क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, एलोक्यूशन और मॉडल मेकिंग कंपटीशन था. कुछ कॉम्पिटिशन्स तो आज सुबह फर्स्ट हाफ में ही हुए थे और मुझे लगता है आप में से कई सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा आपने. In addition to these competitions, we also have added the fun element this time. So, musical evening, space parade for kids, और even स्पेस रंगोली ये भी हमने ऑर्गेनाइज किया था इस बार वर्ल्ड स्पेस वीक के अंतर्गत. तो ये तो था हमारे इन 7 दिनों के बारे में कि हमने क्या क्या सेलिब्रेशंस किया, किस किस एक्टिविटी को हमने परफॉर्म करा और किस में आपने पार्टिसिपेट किया. बट इसके बाद हम चलते हैं अब उन लोगों के पास जिन्होंने हमें लीड किया
So let me request all our dignitaries to please come on the dais. Please, sir. Thank you, sir. Sri Ravi Kumar Verma, sir, is mechanical engineer and has passed in engineering in 2005 with honors. He joined Space Application Center in year 2006 in VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम, जहाँ पे उनका काफ़ी सारा योगदान था इन रॉकेट टेक्नोलॉजी जैसे कि PSLV, GSLV Mark II, PSLV Mark III. Presently, Sir is working as senior scientist in Space Application Center, where he has contributed in satellites for ISIT-2B, Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3, to name a few. Sir, उन few scientists या उन few वैज्ञानिकों में से हैं जिनका रॉकेट टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स दोनों में वर्किंग एक्सपीरियंस है. तो इन सर ने एक 7 अक्टूबर को यहाँ पे टॉक भी डिलीवर किया था, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारा मतलब दे वर वेरी फैसिनेटेड, क्योंकि सर ने उन्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी और इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बताया था. तो अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब रवि कुमार वर्मा सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ. प्लीज सर. थैंक यू रिचा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड के बिगेस्ट वैलिडिटी या बोलना चाहिए समापन समारोह में, है ना. अगर आप देखें ठीक से तो बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक इन इंडिया एक्चुअली गोइंग टू बी हैपन हियर, ना. तो आप सभी के लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि वर्ल्ड स्पेस वीक जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है, जिसको हम विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी बोलते हैं, उसका अगर क्रेडिट जाता है या बोलना चाहिए इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को अगर हमने सेलिब्रेट किया है तो मोस्ट आई थिंक सारे गुजरात में वर्ल्ड स्पेस वीक के सेलिब्रेशन का जो क्रेडिट जाता है वो सेक इसरो, गुजकोस्ट और साइंस सिटी को जाता है कि यहाँ के बच्चों को इनकलकेट किया जा रहा है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके. किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या है समापन अच्छा नहीं, मतलब समापन के बारे में जब बात करते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है, राइट. लेकिन फिर भी कहते हैं अंत भला तो सब भला. तो आज सभी को एक्चुअली वैलिडिटी या समापन समारोह, इस समापन समारोह में जैसे मुझे जो ड्यूटी दी गई है वेलकम करने की, तो मैं उसमें आप सभी को पहली बात तो इनवाइट करता हूँ ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस. फॉर्मली आई वेलकम अपूर्व भट्टाचार्य सर. ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एज वेल एज द एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद. सर आपका इवन आपके बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी सर आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आपने इस ओकेशन को सर ग्रेस किया. थैंक यू वेरी मच. और सर मैं आपको वेलकम करता हूँ सर आज के वैलिडिटी फंक्शन के लिए. सर नरोत्तम साहू सर, डॉक्टर नरोत्तम साहू सर एक्चुअली एडवाइज़र भी है और मेंबर सेक्रेटरी भी है गुजकोस के, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि किस तरीके से साइंस को आगे बढ़ाया जाए, स्पेशली गुजरात सिटी में. और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष भी होता है कि अगर आप नई जनरेशन के अगर बोलते हैं ना विक्रम साराभाई, अगर आप देखेंगे या नया कलाम अगर कभी निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके थ्रू ही सर उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर गुजरात से निकलेंगे तो. और जब भी इसे इसरो ने कोलैबोरेटिव इवेंट किया है साइंस सिटी और गुजकोस के साथ, तो हमेशा एक नए मार्वल्स या बोलना चाहिए कीर्तिमान या रिकॉर्ड्स ही डेवलप करे हैं. और इस बार भी हमने कोशिश करी थी कि उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाएं. तो थैंक यू सर. मैं आपका सर एक्चुअली वेलकम करता हूं सर वैलिडिटी फंक्शन वर्ल्ड स्पेस वीक 2023 के लिए. वेलकम सर. ब्रजेश परीख सर ऐसे तो जनरल मैनेजर हैं साइंस पॉपुलराइजेशन के गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस सिटी में, लेकिन परीख सर का डाउन टू अर्थ और हर एक चीज़ में परफेक्शन के साथ जो काम करना है वो सर से सीखने लायक है. तो आई वेलकम सर आपको भी. मैं सेक इसरो की सारी फेटर्निटी फैकल्टी मेंबर्स, सारे ऑफिशियल्स जो गुजकोस्ट और साइंस सिटी से आए, मैं आप सभी को भी वेलकम करता हूँ. क्योंकि स्पाइट ऑफ इतने बिजी शेड्यूल, इतने सारे प्रोजेक्ट है, आप लोग रीजनल साइंस सेंटर पाटन, भावनगर, राजकोट और भुज तक गए हैं. और स्पेशली जो लोग भुज तक गए हैं उनको तो अलग से मतलब मुझे धन्यवाद देना चाहिए. और आप लोगों ने एक्चुअली जो एक नई जो साइंस की जोत जलाई है अलग अलग रीजनल साइंस सेटअप में वर्ल्ड स्पेस वीक की, वो आगे चल के आपको एक है ना बहुत बड़ी मतलब बहुत एक बड़े लेवल पे जाके आपको दिखेगी. तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन कि आप लोगों ने हमारा एक शॉर्ट इनविटेशन एक्सेप्ट किया था. तो मैं आप सभी को एक्चुअली इस वर्ल्ड स्पेस वीक के वैलिडिटी फंक्शन में इन्वाइट करता हूँ सर. तो मोस्ट वेलकम.
सारे बच्चे जो इस प्रोग्राम में आए हैं, स्पेशली मोस्ट ऑफ देम जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में जो आप विनर्स रहे हैं, राइट? और जो टीचर्स, फैकल्टी, स्कूल मेंबर्स और जो लोग इन पार्टिसिपेंट इन प्रोग्राम में नहीं भी विजेता हो पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने भाग लिया, भाग नहीं लिया, है ना? तो मैं आप सभी को एक्चुअली उन सभी के लिए आप सभी को वेलकम करता हूँ। और इस प्रोग्राम के जो एक्चुअली बैकबोन रहे हैं पूरे प्रोग्राम के लिए, तो जैसे मुझे फॉर्मली ड्यूटी दी गई, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँ, मैं एक्चुअली ऋचा का भी ऋचा श्रीवास्तव और पूनम मैडम, आप दोनों को एक्चुअली वेलकम भी करता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम को जो कंसीव से लेके आज परिणति तक ला रहे में, या स्टार्टिंग 4 अक्टूबर से लेकर अगर आज हम मिलिट्री फंक्शन तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम की जो बैकबोन रहे हैं पूनम मैडम और ऋचा श्रीवास्तव, आप दोनों को भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ सर। मैं VSSC ऑफिशियल्स सरवैया जी और उनकी पूरी टीम को भी वेलकम करता हूँ कि आप लोगों का सर पूरे 7 दिनों तक हमारे साथ कंट्रीब्यूशन रहा है। और हो भी सकता है मैंने किसी का नाम नहीं लिया हो, तो जाने अनजाने में अगर मैं किसी को भूलवश अगर नहीं भी ले पा रहा हूँ नाम, तो मैं आप सभी का ऑफिशियली वेलकम करता हूँ आज के मिलिट्री फंक्शन के लिए। और जैसे सब आपको पता ही है कि नॉर्मली हम 4 अक्टूबर से किसी वर्ल्ड स्पेस वीक की शुरुआत करते हैं, 10 अक्टूबर को आज मिलिट्री फंक्शन है। आज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि 4 अक्टूबर ही क्यों सिलेक्ट किया गया है। एक्चुअली 4 अक्टूबर 1957, मतलब 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च हुआ था। तो उसी को एक्चुअली कमोरेट करने के लिए 4 अक्टूबर हमेशा वर्ल्ड स्पेस वीक की शुरुआत होती है। और 10 अक्टूबर 1967, 10 साल बाद आउटर स्पेस की यूनाइटेड नेशन में ट्रीटी हुई थी, जिसमें 57 नेशंस ने साइन किए थे टू कमोरेट द बोथ द डेज, मतलब 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक लेके। इसीलिए हम हमेशा वर्ल्ड स्पेस वीक 4 अक्टूबर से शुरुआत करते हैं और 10 अक्टूबर पे वैलिडिटी या समापन करते हैं। और सन 2000 से शुरू हो रहा है। और जैसे हमेशा आपको बताया है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो हमेशा फोरफ्रंट रहा है एक्चुअली बच्चों में स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज को कल्टीवेट करने के लिए। और ये और 4 लग जाते हैं जब हमारे साथ गुजकोस्ट और साइंस सिटी जुड़ता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस प्रोग्राम को एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे इस बार अपलिफ्ट किया गया है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को फॉर्मली वेलकम करता हूँ आज के मिलिट्री फंक्शन के लिए। थैंक यू। थैंक यू रवि सर, वैसे आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि यहाँ पे इनॉग्रेशन फंक्शन से लेके आज वैलिडिक्टरी फंक्शन तक सब कुछ, मतलब फ्रॉम डे वन लास्ट डे हम गुजरात साइंस सिटी के साथ तो जुड़े ही हुए हैं। हर दिन कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे होता ही रहता है। तो द लेवल ऑफ सपोर्ट एंड कोऑपरेशन दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गुजरात साइंस सिटी इज लाइक फार इज लाइक बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। जैसा कि मेरा बहुत मतलब आई फर्मली बिलीव that leaders are always instrumental in successful execution of any event. Without the leaders, the team won't get the vision and the guidance which they require from time to time. So here for Gujarat Science City, I would like to firstly thank on behalf of Space Application Center Sri J.P. Wader sir, वो आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित नहीं है। He is additional collector and executive director. एंड वो उनका गाइडेंस हमारे साथ पूरे टाइम रहा। बट कोऑर्डिनेशन पार्ट जो किया है डॉक्टर विजेश परीख सर ने, ही इज जनरल मैनेजर फ्रॉम साइंस पॉपुलराइजेशन ऑफ गुजरात साइंस सिटी। ही हैज़ बीन विद अस थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। मतलब सर ने ना ही सिर्फ अपनी टीम को गाइड किया बल्कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट भी किया। तो थैंक यू सो मच विजेश परीख सर। सर के वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मैं बहुत सारा बोलना भी चाहती हूँ बट टाइम की कमी होने की वजह से मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ विजय परीख सर को। सर प्लीज़ आप आइए और हमारे ये सभा का संबोधन कीजिए। गुड इवनिंग ऑल। साइंस सिटी घुमाए सब। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, साहू सर, रवि सर, रीका मैम, ऑल द साइंटिस्ट द सेक्रेटरी, सरवैया सर, पूनम मैम, मेरी टीम, हर्षदा बहन, साइंस सिटी की सारी टीम, PR टीम, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये कहता हूँ ना, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है सबका, क्योंकि किसी एक के बिना ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता। तो मैम ने कहा साइंस सिटी, लेकिन साइंस सिटी ऑलवेज खिलता रहता है बच्चों से।
तो मैं उन प्रिंसिपल्स को, उन वाइस प्रिंसिपल्स को, उन टीचर्स को और स्टूडेंट्स को खास बधाई दूँगा कि सातों दिन हमें कुछ ना कुछ स्कूल से बच्चे आते रहे। स्पेस टॉक किया उसमें, हमने म्यूज़िकल इवनिंग रखी उसमें। आज भी मॉर्निंग से हमने जो अलग-अलग प्रोग्राम रखे थे, मॉडल मेकिंग है, रंगोली है एंड इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, जो भी एक स्पेसिफिक टॉपिक था, उसके लिए साहू सर के लिए थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्पेस ये टॉपिक जो दिया साहू सर ने, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि सर क्या करें इस बार, क्या टॉपिक दें? तो इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन और मॉडल मेकिंग दोनों के लिए सर ने बोला, स्वच्छ भारत चल ही रहा था 2 अक्टूबर से, तो सर ने बोला हम स्वच्छ स्पेस, क्योंकि डैबरीज आर वेरी बिगर इश्यू, गोइंग टू बी बिकम बिगर इश्यू। सर ने बोला लेट अस गेट सम क्रिएटिविटी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और आज हमने देखा भी सही इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में और मॉडल में भी कि उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है। तो मैं थैंक्स तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ही कहूँगा, क्योंकि जिनकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम हर जगह, यहाँ पे सीएससी में भी किया हमने, आरएससी में भी किया, हर जगह वो सक्सेसफुल हुआ है। और डेफिनेटली रवि सर, उनकी टीम और नीलेश सर तो ऑलवेज गाइड है ही हमारे, लेकिन इनके साथ हम कंटिन्यूस में कुछ ना कुछ होता है कि सर क्या करना है, तो बोले ऐसा कर लो। तो दैट टाइप ऑफ एक इमीडिएट आंसर मिलना ना कोई भी चीज़ का। सिमिलरली साहू सर बोले कि सर ऐसा हो रहा है तो क्या करें, तो सर बोले ऐसा कर लो। तो ये एक एक्सपीरियंस ही पर्सन जो है हमारे, और सर तो यहाँ मतलब जो रवि सर ने सही बताया कि साइंस सिटी में ही थे सर पहले तो इतने साल से, अभी गुजकोस्ट में तो अभी अभी गए, लेकिन अभी भी उनका लगाव हमारे साथ इतना है, हमें ऑलवेज गाइड करते रहते हैं। तो डेफिनेटली साहू सर के लिए स्पेशली क्लैप होना चाहिए। तो खास ये हमारा नाता है। मैं आई हैव जस्ट ज्वाइन इन लास्ट अप्रैल, और मैं लकी था कि तब गगनयान का प्रोग्राम हो रहा था यहाँ, और तब से इसरो के साथ हमारे कंटिन्यूस प्रोग्राम चल ही रहे हैं, और मैं 1.5 साल में तो इतने सारे प्रोग्राम में मैं खुद इन्वॉल्व हुआ हूँ कि मुझे भी लगा कि आई एम द पार्ट ऑफ द इसरो। मैं काफ़ी सीख रहा हूँ, और टीवी में जो होता है ना सब पॉपुलराइजेशन करने का, कि भी चंद्रयान 3 में क्या होता है, आदित्य L1 में क्या हुआ, तो मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि उसको और हम आगे बढ़ाए, बस यही कामना है हमारी। थैंक यू सो मच। यूजुअल हम लोग को भी ऐसे ही लगता है कि हम लोग कुछ कोई साइंस सबके साथ ही काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, वर्ड वर्ड पॉपुलराइजेशन आप लोग को पता ही होगा वो क्यों है, क्योंकि हम मेंटेनेंस और अपडेट जो न्यू रिसर्च न्यू आइडियाज कॉन्टिन्यूसली वाणी सर और परी सर करती है। तो एक बार जोरदार तालियां गुजरात साइंस सिटी के लिए। आरएससी जो कुछ कोर्स साइंस सिटी के साथ रहा है, इनकी कुछ कोर्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनकी जो टीम स्पिरिट है, डेडिकेशन है, और जो पब्लिक आउटरीच है, बहुत मतलब इसके साथ एडमायरेबल क्वालिटीज ऑफ गुजरात साइंस सिटी ऑल्सो एट कुछ कोर्स ऑल्सो, उनका पब्लिक आउटरीच बहुत अच्छा है। एंड जैसा कि मैंने बोला पहले भी बोला और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, I firmly believe in the leaders, the vision they have, the guidance they give, the team, very efficient guidance and the vision from the leaders. And here the leader is Dr. Narottam Sahu, sir, advisor and member secretary GUJCOST. Sir is a scientist by profession and science communicator by training, who has taken science to common people. Sir has been a senior scientist and executive director in Gujarat Science City, with which Sir has been associated since 2001. His dedicated efforts helped establishing his Gujarat Science City as a world-class popularizing platform, science popularizing platform. For his remarkable contribution, Dr. Narottam Sahu sir was bestowed with many awards, though I mention only few. He is recipient of Young Scientist Award by Department of Science and Technology, Department of Medicine in 2000, Dr. D.C. Ray Award for Science Popularization in 2014 by Indian Science Congress Association. He was also awarded as the Best Personality in Science and Technology for year 2015 from Computer Society of India in association with the Federation of Engineers India, Indian National Science Academy. INSA conferred the prestigious Indira Gandhi Prize for Science Popularizing in year 2017. Also named as the Times Gujarat Icon for year 2020 in the field of science and technology by the Science Council.
Please address the gathering. थैंक यू सो मच रिचा मैम। अब तो पूरा आसमान में पहुंचा ही दिया। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट डॉक्टर अपूर्व भट्टाचार्य सर, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, Ravi Kumar Verma sir, senior scientist and main coordinator of this is World Space Week program, Richa ma'am, sir हमारा विक्रम सराभाई से, and all our very eminent dignitaries and experts of Space Application Center, ISRO Ahmedabad, all our faculties, those who have taken classes and conducted activity sessions, my colleague Dr. Poonam Bhargav, Principal Scientific Officer, Dr. Brijesh Parikh, Scientific Officer, Science Manager here, and all our esteemed students and teachers. Actually, this was a wonderful program. Every year, Scientific, GUJCOST, TAC ISRO, we conducted this thing. And this year, it has added many, you can say, fuels and imaginations and loads of creativity. Because the recent success that you have written in the sky, it was really reflected on the ground. The moment we are talking about space science, so the first question comes to our students' mind, teachers' mind, parents' mind, mother's mind, even the people of media also. They were asking about what happened, what next. So somebody was asked me that हम लोग चंद्रमा में पहुंच गए, चलो अभी हम लोग शनि में चला जाएंगे कि कोई नेपच्यून में जाएंगे. So now they have the thinking thought process, which is the main pedagogy of science and technology, that has taken a very broadened step, which was very difficult. The moment, the time when we have suffered through the COVID-19 and that pandemic situation, it was a worst condition for us, but it taught a lot of good lessons, like how to communicate the hard conditions, how to take the closure of our all this technological development, all these things. That's the way now we are having all this. That has given a wings to our communication. We have so mastered in this type, so that having the program here, we can be with the student, teachers, participants from all across the country. Fortunately, we are in Gujarat, the state S&T council, with our state the large scale science city here. We have 4 regional science centers, 33 community science centers, and equally we are also equipped with or having networking with 35 state S&T councils all across the country, 29 states and 6 union territories. So those who are also our counterparts. So whatever the programs we are conceived or organized here, it is going to be there, and there all those whatever may be the as for the content, concept, or the clarity, the students are participating. So that way we can say that we have achieved this World Science Space Week program as a pan-India program, not only in Gujarat, but also other state S&T councils with a large number of participation, large good comments and good suggestions and these things. It gives you lots of things, but all the credit goes to the ISRO and Space Application Center. Students were very much fascinated to see a scientist. ये साइंटिस्ट के हिसाब से इनको मालूम पड़ता है कि ये लैब में काम करते हैं, इनका वाइट कोट होगा, इनका बियर्ड होगा, बाल वाइट होगा, इस तरह का कुछ होगा. बट स्पेस साइंटिस्ट का कल्पना करना इसका बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग कभी दिखते नहीं, ये हमेशा स्पेस में रहते हैं एंड स्पेस के पीछे रहते हैं. तो मोमेंट कल तो मुझे लगा, yesterday I was fortunate to have with the team to this school, Navodaya school. So the way they have arranged, the way the spirit was there with the principal, staff members, so even in support staff and the things, 500 students, they were gathered in a mandap in the outside, and the mandap was also created. The principal was mentioning that mandap was created by the student themselves, because it's a residential school. So mandap and all these arrangements were made, and the way also our scientists, they have
this thing, मुझे तो लगा we are in the moon. बिल्कुल ऐसा ही था, क्वेश्चन आंसर इनका इतना ये था, हार्ड था, क्रिएटिव था. So all these things, I think I believe that all these our scientists, faculties, they must enjoyed that thing. That's a new experience when they are going outside of their campus. It's another space, another book, another chapter they have received, and that is the perception they have to carry for their activity work, and that will be inspire them to think or work beyond their capacity. So this program has added lots of new thoughts, new thought processes. It is no doubt going all across the country through our CSC, through our RSC, and this is the first time the scientist has gone to the school, common people, public. It has made a tremendous effect also, because every time we have connected to our honorable PMO, CMO, and honorable PMs has a vision that every scientist should have some sort of outreach thing, so that the students can be groomed. बिकॉज एक साइंटिस्ट जनरेशन जब एंड तक आ जाएंगे, वी हैव टू इंश्योर दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो फॉलोइंग अप. Unless until we have to ignite them at this right moment, until we have to sensitize them what is happening, what is thing, so it is very difficult to groom them and to connect with this team. So that's the reason this is there. And with the experiences, with the participation, with the deliberations, I think I have discussed with my team also. We have to prepare a technical paper also, so that how these things could be followed, taken care by other state scientific council, other scientific organizations, and other scientists also. Even we have 40 network of CSR science labs, and they are equally good in terms of resources, opportunity, these things. But they don't have that type of spirit, the way we have seen with our space scientists here. Thank you so much, ma'am. And thank you so much to our director, Nilil Desai sir. He has given a very clear and very loud message that yes, this is the movement and this is the way. And the day one also he has come to that level. So and interacted with things. So this program was also due success due to its a hard backup with content and a concept. So that was given by the SAC ISRO. We are the vehicle, lander, and the rovers are here. They are moving 30 meter per day. So ऐसा 30 meter per day, if a student has moved, you can imagine how much area they have to cross. And that is the network and that is the things. So orbiter, lander, and the rover. So this way we have working, and we enjoyed this association, we enjoyed this spirit, and we hope that this association, this activity will continue for the betterment of our student society, and we're looking forward for a great and more collaboration. Thank you. And my special thanks to Director Sir, Associate Director Sir, entire team of ISRO, our Science City, all our GUJCOST, all our CSCs, all our RSC, all other state scientific councils, who are also live streaming, seeing this program, joined with this program with live streaming. So my compliments to all of you, and together we can make a difference. Thank you. Thank you, Sahu sir. Very rightly said, our Director SAC, Nilesh Desai sir, was very involved in this entire program since the conceptualization and initial stages. But due to sir's other official commitments, he could not make it here today. But he was here in the inaugural function, and he even delivered a talk based on Chandrayaan 3. So that was a wonderful session. Being the space agency of global repute, Space Applications Center has always celebrated World Space Week, but this year it is celebrated in a very grand manner, and thanks to GUJCOST and Gujarat Science City. We are very privileged and honored that Sri Apurv N. Bhattacharya sir, Associate Director R&D SAC, has accepted our invitation at a very short notice. जैसे कि रवि सर ने बोला कि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने सर से रिक्वेस्ट किया, एंड सर आए आज यहाँ पे. ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. सर यहाँ पे हैं और सर बहुत सारे मिशंस को लीड कर रहे हैं. तो मैं थोड़ी सी डिटेल सर के बारे में बताना चाहती हूँ. सर इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट and is leading research and technology developments for realization of advanced communication, remote sensing and planetary missions of ISRO.
He has designed and realized Earth stations and satellite payloads in different capacities as project manager, head, associate project director, group director, and deputy director. He is leading design and realization of critical technologies and subsystems for satellite payloads like MMIC system on chip, system in package, semiconductor fabrication, process qualification, nanoelectronics, quantum and nanophotonic devices, space environment simulation, etc. These technologies led to successful realization of present ISRO missions and are major enablers for future missions. There is a fellow, IET member, Working Group for Nanotechnology, member, Board of Governors, and Board of Studies of several national institutes. May I now request Sri Apurban Bhattacharya sir, Associate Director, R&D, Space Application Center for his address. Please, sir. Esteemed Dr. Sahu Sahab, Dr. Parikh, Ravi, all the distinguished guests and teachers and students. It's indeed my privilege to attend this function. I was not at the beginning, means I was not at the inaugural session, definitely, but today I am privileged to be a part of it. And it's a grand celebration, I should say. And I have never seen such a celebration of World Space Week across a state, and where all three organizations are participating. It's a real work of collaboration, and definitely ISRO is known for the collaboration, because you know that ISRO centers are spread across country. So you have to collaborate with all to make a mission to succeed. So it's not new for them to collaborate, but this is a different type of collaboration. It's a outreach program, and the program to involve our nation for this, and particularly the young children, and who will be leading our space in future. And the World Space Week, when I first looked at it at July, the theme was space and entrepreneurship, and this is a surprisingly it's a nice theme, because India is also moving towards that, and we are looking for young entrepreneurs among you, and definitely the space scientists, but also the entrepreneurs. So few things I will share with you about ISRO. You have had sufficient lectures, and our leaders and of that field has talked to you. I am seeing many of them present here. So also we are not in space. We are trying to take everybody in space, actually. And our Gaganyaan team is also there, I'm seeing. So it was really, really very encouraging that, okay, we could get this much outreach just because of your association and Science Cities Association. So, you know all, because you are all space kids, and you all know about how ISRO started, and how it is different from the other world organization of space. And the credit goes definitely to Gujarat and Dr. Vikram Sarabhai. He envisages the program in a very different way than what other nations thought. What he thought is, okay, if we are doing a space program, it should be for the benefit of the people. And what happened during that, in making that program, we learnt everything. So when we see it, how it started, it was a side program. You all know probably, because till so much time you are associated with this celebration and others. SITE was a program for education of rural Gujarat. That also started at Gujarat only. And after that, there was a coconut wilt disease at Kerala. And these two actually, they are actually beginning of the India space program. How it happened? Okay, when SITE program became a success, then ISRO started working on different technologies, because I am from the technology field. So different technologies means they started working in microwave, electromagnetic waves, and the antennas, and all other electronic devices. So what happened with that? We could reach to a certain level that we could make communication satellite. Then we started making cameras, optical component, telescopes. With that, we could make remote sensing satellites.
And after that, we all know, though, we have gone to navigation satellite also. And right now, this human space program also you have listened. So all the things we have covered while learning. While learning, we have served the country. See, all other countries, what they did, they invested only on space, and it was a money sinking activity, you can say. But India, by the way of learning, they have given a nation communication satellite, remote sensing satellite, and navigation satellite. That's the ingenuity of Indian space program. Now, once you make a satellite payload here, we are working in payload here in SAC. You need to make some satellite buses. Buses means what, you have to take the fit the payload in that. You have to put a structure. You have to manage the thermal, and then you have to give power to it. So these all, when it is done, that is called satellite bus. That is done in Bangalore, USA. And after you make that, you have to take it to space, and there is a huge center, VSSC, which is doing this space transportation. So combining all these things, you have a space program. Now you see that how much collaboration activities are involved in all these things. Now, once you have done all these things, what happens? You have a grasp over all the technologies, whatever you need for planetary exploration. So now that made the vibe in India throughout. So we had 6 planetary missions in almost 14 or years, 14 years around. So that now every year probably you will see a planetary missions, but that is just the culmination of our technology, whatever we have done throughout our development phase. Now this is advancing science and technology. Now, being in Science City, I'll tell you something to think about. Think about means, see, like we started Newton's gravitation. We started with Newton's gravitation, and we could get the technology for satellite, a planetary landing, and all these things. That was time was around 1647. But after that, it was Maxwell, James Clerk Maxwell. You might have heard about, and it is 1870, where he introduced the electromagnetic waves and equations. Now that has become the key to our universe, because whatever data you see in light only, and that too we see with our eyes. Eyes means it has got very limited visible spectrum, only you can see, nothing else we can see. So what scientists or engineers job is that, okay, your perception is limited, you extend the perception. So that's how we did it. We did from infrared to X-ray, and you probably heard all these 3 lectures. Which is we talked about that. Okay, remote sensing application to agriculture, application to humankind, and all these things. So there, whatever has come is the extension of our sense organs, you can say, so that we can look at agriculture from at different spectral bands and with minute frequency resolution. They are called hyperspectral. Probably you might have they might have talked to you. And human space program needs lot of sensors. Now we have sensors. We have eyes, we have ears, we have a nose, but you know that they are insufficient. So they have made all the sensors so that a space can be habitable for human. So that is one. So these are all actually has come from this engineering of quantum. I missed that. Okay, quantum technology. Next, it came quantum technology. Quantum technology is responsible for all your electronic devices and all the sensors. Now, what you probably has heard about it, but not much gone into that. What quantum technology is. Now, our transactions in banking, how it goes now. It goes with the OTP and all these things, and they are currently unsecured. And quantum technology has something inbuilt into it, which is called quantum entanglement. Using that technology, you can use a secured communication. So these are all a gift of science, but we are transforming it to technology, and that is what is the reward of pursuing science. So all of you are invited to pursue science and technology,
so that you can serve mankind in a better way. So that's what I will expect from you. And okay, about space, probably you are already familiar with all of them. But have you wondered that whenever you talk about something, when you open your eyes, what do you see? You see space only. If I ask you, whatever, if you have any particular preference for movies and others, I know that at least one or two will come from space movies. Maybe it is Gravity, maybe it is The Martian or something. So that you see space, how it has captured our imagination. Our sense organs are always engaged in exploring space. Our mind is always engrossed in going into space. So with all these motivations, I expect your young generations to come more in space, and they will be contributing much more better way than whatever we are doing now. Thank you all. Thank you so much, sir, for enlightening our audience about the objectives of Indian space program, and also for making them acquainted with the technical complexities that are involved in our space missions. Thank you so much, sir, once again. Now coming to the most awaited part of our today's program, announcement of results. So we had various competitions conducted during this week-long celebration. A big thank you to all the students who participated in our competitions and made this program a huge success. So I now request our dignitaries to please felicitate the prize winners of Rangoli competition. So please. Third prize goes to Khani Dhruvi. Khani Dhruvi. Second prize goes to Chavda Shreya. Chavda Shreya. Any guesses for the first prize? कितने लोगों को लगता है कि उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा रंगोली कंपटीशन में? Yes, guess is right. Sayyed Zahra Fatima. Congratulations. Please give a huge round of applause for our winners of Rangoli competition. This simply shows कि she is a well deserved winner. सब बच्चों को भी पता था कि उनका सबसे अच्छा बना है रंगोली. Coming next to elocution competition, third prize goes to Joshi Shreya. Joshi Shreya. Second prize goes to Thakkar Khushi. Thakkar Khushi. Any guesses for the first prize? वैसे तो आपको सभी को हाथ उठा देना चाहिए. बी पॉजिटिव. प्राइज मिले ना मिले, मिलने की उम्मीद तो रहनी चाहिए. चलिए कोई नहीं, अभी बताइए किसको लगता है फर्स्ट प्राइज मिलेगा एलोक्यूशन में? चलिए मैं ही बता देती हूँ. प्रजापति वंश. Congratulations to all the winners of elocution competition.
Coming next to our model making competition, we have groups here. Third prize goes to Mangilal, Karan and Ayush. Sir. Second prize goes to Parekh Manisha. Parekh Manisha. अब मॉडल मेकिंग में तो आप लोगों ने एक दूसरे के मॉडल्स देखे ही होंगे, तो बड़ा इजी होगा गेस करना। फर्स्ट प्राइज किसको मिला होगा? क्या बोल रहे हैं? नहीं, फर्स्ट प्राइज गोज टू अवनी एंड मोहित। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आई एम रियली हैप्पी कि आपने एटलीस्ट गेस तो किया। Heartiest congratulations to all the prize winners. जिन्होंने आज पुरस्कार जीते हैं और जिन्होंने केवल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, आप दोनों को ही बहुत बहुत आभार स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, गुज कोस्ट और साइंस सिटी की ओर से, क्योंकि आपके ही योगदान, आपका सिर्फ भागीदारी ही आपका सबसे बड़ा योगदान है हमारे वर्ल्ड स्पेस वीक के लिए। हमारा पर्पस था आपके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, और आप इतने अवेयर हो। यू पीपल आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अदर्स ऑफ योर एज। Thank you so much for participation, and please give a huge round of applause for them. I request our dignitaries to please felicitate our organizing team. Paresh R. Surveya from Space Application Center. Meghal Ashwin Desai, but ma'am is not here, I guess. Meghal ma'am. Meghal Ashwin Desai ma'am from Space Application Center. Jalshri Harshit Desai ma'am from Space Application Center. Kush Arya from Space Application Center. Deepak Kumar Singh from Space Application Center. Deepak Kumar Singh. Satish Kumar Tripathi sir from Space Application Center. Ayan Das from Space Application Center. Dr. Rojalin Tripathi, Space Application Center. Parul Ajmera ma'am, Space Application Center. Rohit Nagori, Space Application Center.
Anita Pandey ma'am from Space Application Center. Sonal N. Shah ma'am from Space Application Center. Dr. Vrijesh Parikh sir from Gujarat Science City. Ravi Kumar Verma sir from SAC. Krishna Kumari ma'am from Navodaya Vidyalaya. Ma'am is not here. Dr. Poonam Bhargav, Principal Scientific Officer, GUJCOST. Dr. Rajendra Patel sir, Regional Science Center, Bhuj. I hope they are joined with us through virtual mode. Please give a huge round of applause for Rajendra Patel sir. Dr. Girish Goswami sir, Regional Science Center, Bhavnagar. They all are joined with us. Please give a big hand. Dr. Sumit Vyas, Regional Science Center, Rajkot. Dr. Sumit Shastri sir, Regional Science Center, Patan. Now last, Richa Srivastava from SAC. I request the dignitaries to please take their seats. किसी भी कार्यक्रम के समापन के पहले उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है जिन्होंने इस पूरे इवेंट को, इस पूरे प्रोग्राम को आज इतना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा है. तो फॉर दैट I personally had the experience of coordinating this event with the madam, Dr. Poonam Bhargav ma'am, from GUJCOST Principal Scientific Officer. She is a scientist and science communicator currently working at GUJCOST on the designation of Principal Scientific Officer under the Department of Science and Technology, Government of Gujarat. She assumes the responsibility for both science popularization and scientific research activities. She possesses an impressive 16 years of research experience, during which she worked on various aspects of biosciences and biotechnology. Recipient of the DST Young Scientist Award, she made significant contributions to biotechnology research and promotion in the state as a part of her work at GSBTM, Gujarat State Biotechnology Mission. Now, I would like to request Dr. Poonam Bhargav ma'am, Principal Scientific Officer, GUJCOST, to deliver the formal vote of thanks. Please, ma'am. Thank you so much. It's a great honor and privilege actually to be presenting the vote of thanks.
first and foremost, uh, without thanking our director of SAC ISRO, Dr. Nilesh Desai. He just made this happen, and with the communications, he was so busy. Yet he made this program happen. And so, first of all, a very, very big thanks to Dr. Nilesh Desai. He gave us the not more than enough of time actually, and his lecture of the inaugural session will go a long way with all of us. Those who missed it, by the way, they can watch it on GUJCOST YouTube channel. Yes. Sir, we started this journey from Science City, and we took it across the entire Gujarat with the help of our space scientists. So I thank Dr. Sonal Shah ma'am, who actually began the expert talk. Of course, Nilesh Desai sir inaugurated with the expert talk, but then Dr. Shah took it on at Science City. Our crew then moved on to RSC Patan, and I thank Parul madam and Anita Pandey madam, who really I had very nice words of appreciation from everywhere. The students were excited, the staff of RSC Patan was so excited. And from there, we went on to Regional Science Center Bhavnagar, where Dr. Rojanil Tripathi and Shri Ayan Das, they took on space for agriculture. So thank you so much for traveling such a lot. It was a picturesque place. Of course, I believe that you enjoyed the nature and the beauty of RSC Bhavnagar. And then, of course, the farthest of the place was visited by Sri Satish Kumar Tripathi and Sri Rohit Nagori at Regional Science Center Bhuj. The topic was very interesting. In fact, it was space for humankind. And the talk that was delivered and the interactions with our project director was amazing. The students were very delighted to have the space scientists with them. And from there, we went on to Rajkot at Regional Science Center, where Sri Deepak Kumar sir and Sri Kush Arya, they in the Nobel Gallery, they flew the space, flew on the rocket, and it was very interesting topic also. Actually, luckily we had Gaganyaan, India's first manned space mission at RSC Rajkot, and really it was a very interactive talk. And of course, last we went to Navodaya, and really it was an amazing response for Srimati Jalshri Harshit and Srimati Megha Lashwin. We had a grand celebration yesterday at Navodaya, where the success story of Chandrayaan 3 and Aditya L1 was looked into. With this, I also thank the exhibition that was put here in a very grand manner by VSSC. Sir, really thank you so much, and so thank you so much, sir, for being here. And throughout the 7 days, they were here with their staff. So a big round of applause for the exhibition that was put up. And of course, Ravi sir, what to say? I mean, we started all this with a small, I think, WhatsApp message, and it has come to this particular stage. And he also just does it actually. He does not say, but he does it. So thank you, sir. Thank you so much. And Richa, of course, our second big association this time. And again, the same way, the urgency in Richa's call is very high. So you have to respond wherever you are and whatever you are doing. So the amount of urgency she puts in her, in her phone calls, it's amazing. So whatever I am doing, I'll have to respond and I have to, do it. And then, of course, executive director Science City, he just opens the gate of Science City every time. We just have to tell him that we are going to go do this program. Okay, come and do it. And then, of course, the execution part done by Brajesh. So it's amazing actually. He also never says no to anything. Nothing. Ho jayega, madam. It will be done. So that's the best part, the positivity that he brings into the program. The other Science City staff, of course, who were engaged with us, Pulkesh Bhai, Harshita, and Hardik, and everyone. I mean, everyone who contributed to this program at Science City. Then, of course, our advisor, sir, Dr. Narottam Sahu, sir, for every program, he is the pillar behind the programs and the collaboration that we have. Once he says that, okay, go ahead, then the you know small things he puts in the space parade, it was a very interesting thing, and he just puts in some things which make the program more innovative and it makes it more grand. So that, for that and for all his guidance, we thank Sahu sir.
the team at GUJCOST who worked throughout, our project directors who took it on at the very last moment, but they managed the show. I think with your inputs, whatever feedback I have received, they managed it very well. Of course, if there is any flaw in our hospitality or anything, please forgive us and do tell us so that we can, improve upon on the next time. So I thank all my project directors, all the CSC Community Science Center coordinators who took it on at, and each of the program each day went live in all the districts. That was the best part, and I can say that more than 1 lakh students at least online they visited and they interacted, maybe not physically but on the online mode they were there, and they are all still available at our website and our YouTube channel. So anybody can even today go down there and have a feel of that particular program. So with this, I once again thank everyone, one and all the students, all the teachers, all the principals who participated. Thank you so much. Thank you, Poonam ma'am. That was when we do any collaboration and coordination, the Thanksgiving should be from both sides. That was a good coast part. You have listened. I'm here on behalf of Space Application Center. I want to begin by expressing a deep sense of gratitude to Dr. Narottam Sahu sir. Sir has been a constant guide and support, and the innovative ideas that he brings in really superb. And this is what make our this What is Space Week program different from last time. Here we have involved the fun-filled learning activities for the students like Space Rangoli and the space theme like ma'am has mentioned. That was basically a fancy dress for kids. तो बहुत अच्छा साहू सर आपके साथ कोऑर्डिनेट करके सर हमें जब भी गाइडेंस की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को जब भी ज़रूरत पड़ती है, सर के पास बस एक कॉल जानी होती है एंड वर्क इज़ डन. हमें मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है. दीज सर इज़ द काइंड ऑफ लीडर दैट इज़ लाइक टेकिंग द गुज कोर्स टू दिस हाइट्स. थैंक यू सर. कमिंग नेक्स्ट टू श्री JB वाडर सर, लीडिंग दिस गुजरात साइंस सिटी. जैसा कि मैंने बोला, हमारा इनॉग्रल फंक्शन और हमारा वैलिडिक्टरी फंक्शन और उसके अलावा भी म्यूज़िकल इवनिंग, देन ये जो स्पेस परेड फॉर किड्स और इवन हमारे डायरेक्टर सर का लेक्चर यहीं पे हुआ था. तो परीक सर और वाडर सर मतलब बहुत अच्छे से साइंस सिटी का मतलब जो भी पार्ट रहता है बहुत अच्छे से करते हैं. ही दे आर लाइक कभी भी कॉल करो इवन इन द लास्ट मिनट, उनका जो मैम ने बोला द सेम रिस्पॉन्स इवन सैक ऑल्सो गेट कि बस हो जाएगा. Thank you so much, GUJCOST and Gujarat Science City team. Coming to the key people, Dr. Poonam Bhargav ma'am and Dr. Rajesh Parikh sir. Poonam Bhargav ma'am from GUJCOST and Parikh sir from Science City. To be honest, I kept on coordinating with them. We have been like coordinating it from day one, even before day one. Me and Poonam ma'am, we were in touch like 10 days before day one. So the coordination part, what I have learned from these two people, Poonam ma'am and Parikh sir, they are the exceptionally bright coordinators, very like the ones who can really make the things happen. They have the determination and the willpower to take the things to the final stage. Like अगर कुछ आपने plan किया है तो उसको finally execute कैसे कराना है, कैसे अपने सुपीरियर्स को कन्विंस करना है, कैसे चीज़ों को करना है. दे आर वेरी गुड, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट कोऑर्डिनेटर्स टू बी ऑनेस्ट. एंड जैसा कि आपने बोला रीजनल साइंस सेंटर्स के बारे में, दैट वाज फ्लॉलेस. द फीडबैक दैट वी हैव रिसीव फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, दैट वाज रियली फ्लॉलेस. तो ऐसा कुछ भी नहीं है फीडबैक जो मैम आप बोल रहे थे. देयर हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड वाज वेरी गुड. Then on a personal note, I would like to thank our director sir, Srinilesham Desai sir, because without him this would never have been possible. He was involved with us from day one. He was the one who have been with us through its inception, from the stage of conceptualization to even yesterday, till yesterday. Today, due to his other commitments, as I already informed, he could not make it here. So thank you so much, Nilesham Desai sir, Director SAC. Big thank you to Shri Apurvan Bhattacharya sir, Associate Director R&D SAC, for accepting our invitation and for gracing this occasion with his presence.
सर की आज बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप थी, तो हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया सर से एंड देन सर अग्रीड। थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए और हमारे ऑडियंस को इनलाइटन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अब इस पूरे इवेंट को जो भी मैं कोऑर्डिनेट कर पाई हूँ वो रवि सर की मेंटरशिप में हुआ है। ही हैज़ बीन द मेंटर एंड गाइड। ही इज़ लाइक एक्सलेंट मैनेजर एंड अ परफेक्ट गाइड आई शुड से। रवि सर थैंक यू सो मच, हर टाइम पे हर स्टेप पे मुझे गाइड करने के लिए, हर स्टेप पे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सरवैया सर फॉर द सपोर्ट दैट वी रिसीव फ्रॉम VSSC। एनजे भट्ट सर को भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो भी J1 में हमारे साथ थे बट बाद में वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। थैंक यू सो मच हमारे एक्सपर्ट्स जो भुज, पाटन, भावनगर, राजकोट सब जगह गए और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल्स, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स, जिनकी वजह से ये हमारा जो कार्यक्रम है एक हफ्ते का, ये आज इतना सक्सेसफुल हो पाए, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आज के हमारी सभी श्रोतागण, स्कूल के छात्र छात्रा, टीचर्स जो हमारे साथ हैं और उनके पेरेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एवरीवन। With this, I Richa signing off. But before we end, we'd like to felicitate our director sir who is here, Shri Arnav. I think we can sign off now, but I'll request our experts to just join us here, because I don't know when we'll be together again. So many people from SAC ISRO, I can't miss the opportunity to have a photograph with so many space scientists. Please